sir. Yeah. So you are in Patna too, in the same hostel, Aliza? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Well, I have just messaged in the group and people will start to tickle in. Guys, Aman Ali. Hey, Shama. Good evening, sir. Good evening. Please come. Uh-huh. This is how it is with these two. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, Good afternoon, sir. Hey, Aman. Sir. So, good evening. Good afternoon. Take it. Where is this noise coming from? Aman side. Okay. All right, friends. So, कुछ बातें जितनी जल्दी दिमाग में डाल ले उतनी अच्छी. Start, go, eat, run, sleep. इनके साथ is कभी नहीं होगा. मतलब आप कभी इंग्लिश में नहीं बोल पाओगे. You will never be able to say is go, is eat, am eat, are eat. कभी नहीं. Be verb plus V1. Impossible. Is that okay? Be verb plus V1. Good evening. Do you understand V1, everybody? Sharik? You look like you're Atif is Good your afternoon, uncle. sir. Good afternoon. Atif is your uncle or cousin? Cousin. Okay, he's your cousin. All right. You look like him a lot. Yes, sir. Okay. Well, I was saying, what was I saying? हाँ भाई ध्यान रखो. Listen to this. कभी भी यूज मत करना. बस बोलना है कि है, होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं. मुंह से निकला गलत है, लिखा हुआ है गलत है. क्या? Be verb. Be verb means, dear students, is, am, are. Sharik and Aliza, it's your first day today. Let me tell you a few rules. We are always on camera throughout. We don't turn the camera off. Aman, we don't turn the camera off. Not for a second, okay? Keep the camera on all the time. Unless it is a really, really an emergency situation, okay? Means while you are attending the class, you don't play with your camera. Point number one. Point number two, your mic is normally muted, but when you want to speak, you can unmute yourself because the control is in your hand. Okay? The control is in the hand of the students online. So they can unmute themselves whenever they want. Now, lesson. Very important lesson. सब लोग समझते हैं V1? V1? Everybody understands V1? Give me V1. Give me examples of V1. Eat, sleep, run, go, whatever. All the verbs. V1. Okay? V1. Do you understand the idea of V1, Kushi? V1? yes, sir. Okay. Sharik, do you understand V1? No, sir. No. अच्छा चलो. Go means जाना. Eat means खाना. Sleep means सोना. These are verbs. You understand Yes, sir. verbs, Sharik? Yes, sir. Okay. ये क्लियर नो बोलने वाले बच्चे बड़े अच्छे होते हैं. फटाक से. नहीं पता है? नहीं पता है. ओके. मेरा काम आसान. नहीं पता है बच्चे को बता दो. तो verbs. चलो अब देखते हैं. टीचर, शिक्षक, noun.
All right. Classroom, noun. Chair, noun. Understand? Confidence, noun. ये सारी चीजें क्या है? Noun. तो noun से verb अलग है ना? एक verb का example दो, शारिक. Give me an example of a verb. Verb means काम. जैसे काम sir. sleep, जैसे eat, जैसे run. ऐसे एक verb देना शारिक. Yes, sir. Give me an example. अलीजा. So, walking, sir. Walking में सिर्फ walk बोलना, ing हटाओ. Walk. Walk. और बताओ. Teach. Teach. Come on. Elisa, you give me an Run. example. Very good. Elisa, give me an example too. Sleep, sleep. Sleep, yeah. Slap. थप्पड़ मार देना. Okay. So, verbs. ये जो हम लोग याद करते हैं ना, यही है V1. ing लगा दिया तो V4. Sleeping, walking, slapping, teaching, learning, shouting. ये सब क्या है? V4. Thank you, बेटा. So V1 without ing, है ना? तो यह रूल नंबर 1 एकदम दिमाग में डाल दो. एक और चीज आइडिया देता हूं. बी वर्ब कुछ लोग पढ़े हैं. Those who are here for the first time, they will learn. Is, am, are. These three words are different forms of be verb. Is, am, are. ये तीनों क्या हैं? Different forms of be verb. ये be verb ही है, अलग अलग फॉर्म है. तो बी वर्ब के किसी भी फॉर्म के साथ V1 नहीं आ सकता. कभी भी दोनों कॉम्बिनेशन नहीं बनाते. तो किसने बोल दिया आई एम गो, वो राइट है कि रॉन्ग है? होना ही है उसको रॉन्ग. क्यों? एम कौन सा वर्ब है? उसके बाद क्या बोला तुमने? गो, V1. रॉन्ग. शी इज टीच, शी इज टीच. रॉन्ग हो गए. क्या समझे? तो ये अगर आदत पड़ी हुई है हमें, तो इसको छोड़ देनी है. वी विल नेवर एवर से बी वर्ब का कोई भी फॉर्म प्लस V1. इम्पॉसिबल. नहीं बोलना है. गॉट इट? कॉम्बिनेशन ही नहीं बनते. अगर गलती से निकल गया मुंह से, समझ जाओ मतलब एरर है उस सेंटेंस में. किसी ने लिखा दिखा दिया, दैट सेंटेंस इज रॉन्ग. V1 with B verb not possible. अब एक शॉर्टकट देता हूं अगर काम कर जाए तो. मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग. आई एम Speaking. एम मतलब बी वर्ब, स्पीकिंग ing फॉर्म. तो ये बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन इंग्लिश. बी वर्ब एंड V4. ठीक है? दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग. आर बी वर्ब और इसके बाद ing फॉर्म. बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है. दे आर स्लीपिंग, they are eating, they are dancing, they are reading. कॉमन कॉम्बिनेशन है. बी वर्ब हो एंड ing हो. चलो आर के साथ ज्यादा कर दिया, थोड़ा इज बुरा मान जाएगा. चलिए इज के लेके साथ चलते हैं. मोनू इज थिंकिंग, मोनू इज थिंकिंग, ही इज थिंकिंग. बी वर्ब इज एंड ing. बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है. इसका हिंदी एक खास तरह से होता है. क्या? वो सोच रहा है. मोनू सोच रहा है. प्रिंस इज attending the class. Prince is attending the class. Attending ing. Prince is attending the class. Prince class attend करता है, कर रहा है? कर रहा है. बस इस बात पे ध्यान रखना, कर रहा है. All right? I am teaching you. I am
हिंदी मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसकी हिंदी क्या हुई, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मैं आपको मैं आपको पढ़ा पढ़ा रहा रहा हूँ। हूँ। तो ये वर्ब के कॉम्बिनेशन देखिए और हिंदी से कनेक्शन बनाइए, दिमाग में ले जाए। अच्छा, आई एम टीचिंग यू हिंदी, राइट। मोनू भैया मुझे मार रहा है, कैसे बोलोगी आकांक्षा? ही इज बीटिंग मी, ही इज बीटिंग मी, एग्जैक्टली, ऑलराइट। और मोनू बोला हम तो मजाक कर रहे हैं, आई एम जस्ट किडिंग, जोकिंग, राइट। और मैं बोलो आ रहा हूं, आ रहा हूं, भी आ रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा? आई एम कमिंग विद अ स्टिक, आई एम कमिंग विद a stick. What do you want? The AC or the natural air through the windows? Natural air. Open the window then. Could you do this, please? Okay. तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इस चीज को, बिकॉज ये मतलब बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट आई थिंक शॉर्टकट आइडिया दे दिया बिकॉज इट्स एन इजी आइडिया टू अंडरस्टैंड। दिमाग में चला गया क्या? तो मुझे बोल के बताओ कि क्या नहीं बोलना है, वो बोल के बताओ, उस एग्जाम्पल दो और बोलो ये गलत है। शी इज टीच, ये रॉन्ग है, और सब लोग एक रॉन्ग बोल के दिखाएंगे कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम बीट, ठीक है, ये रॉन्ग है। और He बताओ। I is am attend eight. the class. यस नूर। We are I am learning. attend the class. आई एम अटेंड द क्लास, रॉन्ग इंग्लिश, राइट। शमा, Yes, sir. She is it. शी इज ईट, रॉन्ग इंग्लिश। यस अलीजा, We are learn. कम अगेन अलीजा। We are learn. We are learn. वी आर लर्न, रॉन्ग इंग्लिश, बहुत अच्छे। शारिक, He is walk. ही इज वॉक, खुशी बेटा। She is walking. मैंने क्या बोलने के लिए बोला शारिक? Wrong sentence, sir. तुमने रॉन्ग सेंटेंस बोला। Right. नहीं सर. क्यों भाई? बोलो सर मैं गलत बातें बोलता ही नहीं सर, मुझे माँ बाप ने सिखाया गलत नहीं बोलने के लिए। ओके, दिस इज सिली सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ माइंड। उसने कहा गलत सेंटेंस बोलने के लिए कहा, फिर बोला क्या तुमने? सही। क्यों भाई? गलत बोलने के लिए सिखाया, माँ बाप ने मना किया है गलत नहीं बोलना है, कैसे बोल दूं? आपके क्लास में आया मैं अपने माँ बाप की बात भूल जाऊं एक दिन में? बिल्कुल नहीं। शारिक ने इसलिए गलत बात नहीं बोली। खुशी, I am teach. आई एम टीच, ऑलराइट, वेरी गुड। रॉन्ग सेंटेंस है ये सारे, राइट। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोल सकते कभी भी, इंग्लिश में होता ही नहीं है ये सिर्फ हमारी आदत इसलिए पड़ी है क्योंकि हम लोग को पढ़ाया गया बचपन में इज मतलब है, एम मतलब हूं, आर मतलब हैं। तो जैसे ही हमारे हिंदी सेंटेंस में ये सब वर्ड्स आते हैं, नेचुरली मुंह पे ये वर्ड्स आ जाते हैं, इज एम आर। हूं देखता हूं उधर तो आई एम मुंह से निकल आता है। मेरी क्लास में एक बच्ची है, उसके मुंह से कभी आई निकलता ही नहीं जब बोलते आई एम। कुछ भी बोलना होता है उसका पहला वर्ड क्या निकलता है? आई, मतलब अपने बारे में बोलना है तो सबसे पहले आई नहीं बोल सकते, वो आई अकेले नहीं बोलती, उसके बाद रुक नहीं सकती आई के बाद। उसके मुंह से क्या निकलता है? आई एम। उसको कुछ भी बोलना हो आई एम बोलेगी, उसके बाद बोलेगी वो बात। ऑलराइट देन, आई अकेले बोलना है। अगर हमें कर रहे हैं बोलना है तो बी वर्ब बोलेंगे, आई एम, यू आर, ही इज, एंड देन आईएनजी फॉर्म, है ना? सही क्या होगा? आईएनजी फॉर्म। ऑलराइट एवरीबॉडी। और इसकी हिंदी क्या होगी? कर रहे हैं. रहे हैं, कर रही है, कर रहा हूं, है ना? कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर wasting your time. Am I wasting my time right now? No, sir. Nah, I'm not wasting my time. I'm absolutely investing my time, right? Not wasting my time. I'm investing my time, right?
Yeah. Sir, what's meaning investing? Investment, Shama, investment. When you make an investment, when you invest something, then you want something good from it later. You invest your money into a project, into a share, you invest into a business, and then you earn more money later, right? Investment सुना होगा, investment, right? So you are investing your time, not wasting your time, right, guys? You are investing your time to build a good career in the future. Vocabulary is important, yes. So shall we go to the book now? What was the task yesterday? I asked you guys to maybe read that thing, the blog, Annalisa's blog. Is Vishal here? Vishal, what is he doing downstairs? Did you guys not try to wake him up? It is not time to sleep. Is it time to sleep? Divya, you are his senior. Go ask him why he is not here. Is there a reason? He can come and explain it later. Sorry, listen. If he's not okay, if he's sick, let him be there. But if he's not sick, he should come and attend the class. All right, guys. So, yesterday we learned a very interesting sentence. Aliza, मेरे घर में आपका स्वागत है. हमारे क्लास में आपका स्वागत है, Aliza. How do I say this in English? Yes, Khushi beta. Welcome to my house. Yes, welcome to my house. Welcome to our class, right? हिंदी में मैं है तो जरूरी नहीं इंग्लिश में इन हो. क्यों? क्योंकि जब किसी ने बताया इन मतलब में होता है, वहीं गलती हो गई. ठीक है? इन मतलब में बताने की जरूरत नहीं होगी. इन बताना है, लेकिन इन मतलब में नहीं बताना है. वो खुद ब खुद दिमाग फिगर आउट कर लेगा इन मतलब क्या होता है. बहुत समय नहीं लगता, लेकिन जिसको बचपन में याद करवाया गया इन मतलब में, ऑन मतलब पर, उसने सोचना बंद कर दिया. एंड इस वजह से वो बोल देंगे वेलकम इन माय हाउस, मेरे घर में आपका स्वागत है. आप सामने देख रहे हैं, वेलकम टू माय ब्लॉग. इट्स इन इंग्लिश. Line by line, I will help you understand this. Line by line, okay? Get ready. Tape script 1.11. Annalisa's blog. Day 1. Welcome to my blog. It's in English. It's in English. The blog is in English. It means the blog, okay? The blog is in English. My blog is in English. Hello, I'm an Italian student. Hello, I am an Italian student. We have two different information here. First information is I am a student. And then there is another information that I'm from Italy. I am an Italian student. So, are you an Italian student or you are an Indian student, guys? Indian student. I'm an You are a Indian, student Indian and you are student. from India. India. I am an Indian teacher, guys. I'm a teacher and I'm from? India. India. अगर मैं कहूँ I'm an English teacher, तो? all right. दोस्तों, literally, technically, I'm an English teacher means I'm a teacher and I'm from England. Technically, इसका मतलब ये हो सकता है ना? I'm an English teacher means I'm a teacher and I'm from. Let me explain, everybody. Let me explain. Anyone from Italy is Italian. Anyone from India is Indian. Anyone from China is Chinese. And anyone from England is English. English. Got it? So if I say I'm an English teacher,
It means I'm a teacher and I'm from England. लेकिन I'm a maths teacher मतलब I'm a teacher of Math. I'm a history teacher means I'm a teacher of History. इस हिसाब से I'm an English teacher मतलब ये भी तो हो सकता है ना I'm a teacher of English I'm a teacher of I'm a maths teacher I'm a history teacher I'm an English teacher लेकिन कुछ लोग इस मीनिंग को नहीं एक्सेप्ट करते वो कहते हैं नहीं I'm an English teacher means I am from England तो अगर आप बोलेंगे विनय सर इज एन इंग्लिश टीचर बोलेंगे गलत सेंटेंस है विनय सर इज नॉट एन इंग्लिश टीचर ही इज एन इंडियन टीचर एंड ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश तो कुछ लोग ये फर्क कहना चाहते हैं कि आप करिए एग्जाम वगैरह में तो आप कर लेना फर्क विनय सर इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश एनी प्रॉब्लम्स एनीवन इस सेंटेंस में कोई इश्यू नहीं है विनय सर इज अ टीचर ऑफ English. 70-80% people in the world will understand when you say Vinay sir is an English teacher. लेकिन 20% लोग कहेंगे ना नहीं आप गलत बोल रहे हैं ऐसे मत बोलिए विनय सर इज नॉट एन इंग्लिश टीचर ही इज एन इंडियन टीचर आपको अगर बताना है वो इंग्लिश पढ़ाते हैं तो कैसे बोलिए It's an English. ही इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश सो फाइन नो प्रॉब्लम्स आपको दोनों ही चीजें पता चल गई चॉइस इज योर्स विच वन यू वांट टू से राइट अगर स्कूल में हो और स्कूल में कहा आवर इंग्लिश टीचर इज एब्सेंट टुडे आवर किसी को गलतफहमी हो सकती है आप क्या कह रहे हैं समझ जाएंगे योर टीचर ऑफ इंग्लिश राइट तो कुछ लोग सिर्फ बहस करने के लिए ये सब चीजें करते हैं हम दोनों चीज समझते हैं जरूरत के हिसाब से बोलेंगे इन सम प्लेसेस वी विल से टीचर ऑफ इंग्लिश एंड जाहिर सी बात हम स्कूल में हैं और जो इंग्लिश पढ़ाते वो आज नहीं आए तो हम क्या बोलेंगे आवर इंग्लिश टीचर इज व्हाट्स द प्रॉब्लम आवर मैथ्स टीचर इज एब्सेंट व्हाट्स द प्रॉब्लम इंग्लिश इज ऑल्सो नेम ऑफ अ सब्जेक्ट लैंग्वेज जो उसको पढ़ाते वो एब्सेंट है आवर इंग्लिश टीचर इज तो इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं हाँ अगर ऐसे ही किसी के बारे में बोला जाए डेविड इज एन इंग्लिश टीचर तो कंफ्यूजन हो सकता है whether David is a teacher of English or whether David is a teacher from England we don't know तो जहां कंफ्यूजन हो सकता है वहां क्लियर कर देंगे जहां कंफ्यूजन है वहां इंग्लिश टीचर बोलेंगे नो इश्यूज मेरी बात समझ में आ रही है आपको ऑलराइट सो I'm in Notting Hill, London, I am in Notting Hill, London, England. England. Notting Hill is the name of a place. Is Notting Hill bigger than London or smaller than London? And is London bigger than England or smaller than England? It means when we write 2-3 places in a sequence, then we start with a bigger place or a smaller place. Right. I am in Notting Hill, London, England. I'm here to learn English. I'm here to learn English. Aliza is here. To learn Aliza is here to learn English. Yes, sir. Are you sure, Aliza? Yes, sir. I think you are here just to have a good time. Have a I good have time means have a good time means मजा करना. Have a good time means मस्ती करना. Have a good time means खुश रहना. All right. So Aliza, I think you are here just to have a good time. No, sir. I'm here to learn English. She's here to learn English. Okay, Aliza, are you friends with Shama? Are you friends with Shama? Shama, are you and Aliza Yes, friends? sir. Okay. Yes, sir. Normally what happens, if you are good, your friend is also good. Shama is a good student. And Aliza, the way she's responding to me is also a good student. Okay. Just maintain this, intensity, guys, and things will be all right. Okay. I'm here to learn English. Yamraj comes when you are sleeping. वो क्या बोलेंगे? Ha 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 ha! Ha 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 ha! I'm here to
I'm here to take you with me. I'm here to हिंदी आप क्या बोलोगे महाराज no 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 I'm just let me get married first please give me some time right okay all right next okay think about something else Rishabh you are doing your homework and your younger brother comes there and you say hi go I'm doing my homework he will say no I will not go I'm here to disturb you I'm here to disturb you all right are you here to learn Japanese guys nah you're not here to learn Japanese are you here to learn maths no you are here to learn English, right? Don't say spoken English. I hate that word. पहले ही दिन समझाया था मैंने तुम लोग को spoken English. ये वर्ड कितना कंफ्यूज करता है लोगों को तुम्हें आइडिया नहीं लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि majority of the people think English and spoken English are different. It is different for those people who know English very well. But for you people, you are just here to learn English. चाहे आप उसको बोलें लिखें रोटी के साथ खाएं पैंट के साथ पहने इट्स अप टू यू ओके या नेक्स्ट My English family are the Wilsons. My English family are the Wilsons. She says my English family are the Wilsons. It's a great idea. I want to share. Vishal, come on, come here, come here. Don't worry, I will not scold you. Come here. Come here. Come here, Vishal. Yeah. All right, guys. I'm gonna share with you an interesting idea. A lot of people, okay, England has some countries around it. Germany, France, Spain, Italy, and so many more. So people from these countries go to England to learn English. The best way to learn a language is to visit the country where that language is spoken. If you want to learn Japanese, the best way to learn Japanese is when you go to Japan and you live there. Vishal, come on in. I won't scold you. Come. I will not scold you. I will not shout at you. Come. Divya, see what he's doing. Is he nervous? He doesn't want to come? What's the matter? Okay. So these people, sometimes they live with a family in England. Living with a family is very helpful because when you live with a family, they talk to each other all the time and you listen to their conversation and you learn from it. If you live in a hostel or if you live in a hotel room, then there is no conversation in your room because you are living alone, right? So the best thing you can do is live with a family. Sounds interesting, isn't it? Some people from England, Germany, America come to India to learn Hindi. And they come and they live with some Indian families. The Indian family gives them food and place to live, of course. And in return, they just help a little bit with the kitchen work, with the housework. This arrangement is very interesting. And this person who comes to your country to learn is called au pair. Au pair. A-U-P-A-I-R. Au pair. So in this story, who is the au pair? Annalisa or the Wilson family? Annalisa is an au pair. Annalisa is an au pair. She is not a relative of the Wilsons. She is not a relative of the Wilsons. The Wilsons are not her uncle
or auntie. They are not. They are just her host family. They are just her host family. They live in England, they live in London. Annalisa is living with them for some time. And then Annalisa will go back to Italy after some time. When she learns English in 1 year, 2 years, 3 years, she will go back. She will go back. So Annalisa is Wilson's au pair. Annalisa is Wilson's au pair. She is Wilson's au pair. Any problems? Okay. My English family are the Wilsons. Remember, in English, you can talk about the whole family by saying the surname. My family surname is Sony, Sony, Sony. Everybody has the word Sony, right? So you guys can say the Sonys. The Sonys means Sony family. The Sonys are very good at English. The Sonys are very good at English. Means the Sony members, the family members are good at English. The Sonys, the Vermas, the Khans, the Sinhas. But in India, it's a different thing. We can use it, okay? If I say the Khans are very friendly, it means I'm saying the Khan family is very friendly. The Vermas are very friendly. It means I'm saying the Verma family is very friendly. So the Wilsons means the Wilson family. The Wilsons means the Wilson family. My English family are the Wilsons. Do you have some neighbors? Yes. Your favorite neighbors are? Now you are going to use the surname, okay? My favorite neighbors are the Sharmas. The Sharmas. It means the Sharma family are my favorite neighbor. They are the friendliest. They're most friendly here. They always come to our house, invite us to their house. We have a good relationship with each other. With whom? With the Sharmas. The Sharmas. It means they all have Sharma, Sharma, Sharma with their names. Sharma is their surname. Sharma is their? Yes, exactly. The Kapoors have a lot of influence in Bollywood. The Kapoors have a lot of influence in Bollywood. कपूर फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस है बॉलीवुड में. कौन से कपूर फैमिली की बात कर रहा हूं मैं? ऋषि कपूर, राज कपूर. हालांकि इंडिया में थोड़ा सा मामला बदलता भी है, मैं समझता हूं, लेकिन नॉर्मली आप द प्लस सरनेम बोल करके पूरी फैमिली की बात कर सकते हैं. माई इंग्लिश फैमिली आर द विल्सन्स. हम लोग बोल सकते द विल्सन्स आर वेरी फ्रेंडली. सुनिए. Peter, the husband, and Helen, the wife, have 3 children. They have 3 children. भाई have को बच्चे की तरह मत सोचना. have मतलब पास में होना, ये बेवकूफी होती है. have एक वर्ब है, सीखते जाइए. The husband and the wife, Peter and Helen, have 3 children. They have, yes, they have 3 children. And you have no children because you're not married yet. Okay, no problems. Wait for a few years. I have 1 child. I have 1 child, yes. Edward, 16, Rick, 19, and Rosie, 23. Rosie's married. They're very friendly. They are very friendly. Who's very friendly? They are very friendly. Wilsons. The Wilsons are very friendly. They are very friendly. They refers to one person or more than one person. More than one. They is plural. Then one. They is always. Plural. कुछ लोग गलती कर जाते हैं. क्या कहते हैं? My father is a very good person. They love me. बात समझ में आ रही है? क्या बोल जाते हैं? They किसके लिए? पापा के लिए. अब बताओ तो पापा more than one person. Not a good idea, ना? He loves me. He किसके लिए? पापा के लिए. Because पापा is singular ना, तो he बेहतर है कि they. कुछ लोग कहेंगे he मतलब तो वह होता है, they मतलब वे, तो पापा के लिए वे बोलते हैं.
ऐसे रटंत विद्या से इंग्लिश कभी नहीं सीखी जा सकती। दे मीन्स मोर देन वन, दे इज प्लूरल। ओके, लेट्स मूव ऑन। They are very friendly. The Wilsons are very friendly. But they speak very fast. But they speak very fast. Look at the combination. They speak very fast. They speak very, speak V1 है ना? They speak हिंदी में क्या हो गया? They speak हिंदी, वो लोग बोलते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं? वो लोग बोलते हैं। बोलते हैं। लोग बोलते हैं। और बोल रहे हैं कैसे? स्पीकिंग। बस ये क्लैरिटी रखना, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ने वाले हो। इस बैच को मैं बहुत तेजी से लेके जाऊंगा क्योंकि देयर आर गुड स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ओके, दे स्पीक मीन्स वे लोग बोलते हैं। ऑलराइट, दे स्पीक, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन दिमाग में गया। अच्छा, मान लो बोलना हम लोग बोलते हैं तो Speaking. भाई करो दिमाग, जंग हटाओ यार, कम ऑन। हाँ, हम लोग बोलते हैं तो We are वी speaking. स्पीक। वी आर स्पीकिंग हो रहा है। वी स्पीक। वी आर स्पीकिंग की हिंदी क्या होगी? लोग बोल रहे हैं। हम लोग बोल रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी कि नहीं लगेगी? करेंगे, दिमाग में भी कर सकते प्रैक्टिस। सारी प्रैक्टिस कॉपी कॉलम पे नहीं होती। अलीजा, योर माइक इज नॉइजी अलीजा। ओके, somehow suddenly earlier everything was fine. I don't know, have you made any changes to your settings? Are you using new headphones, new mic or something? I don't know. Earlier everything was fine, Aliza. Suddenly your mic is noisy. Do something about it. दोस्तों, लड़कियां बोलती हैं, कैसे बोलेंगे? गर्ल्स स्पीक, प्यार से, लड़कियां प्यार से बोलती हैं। गर्ल्स स्पीक लविंगली। अच्छा छोड़ो, भारी वर्ड बोल रहे हैं आप, सॉफ्टली बोलना। लवली तो नहीं बोल सकते। गर्ल्स स्पीक सॉफ्टली, नाइसली बोल लो। गर्ल्स स्पीक, लड़के बोलते हैं बहुत बुरे तरीके से। बॉयज स्पीक रूडली, है ना? एक तो बनाया ऊपर वालों ने हमें खराब, और ऊपर से हम लोग बोलते भी है गंदे तरीके से, तुरंत गाली गलौज करने लगते हैं, राइट? एंड लड़कियां सीख रही हो, कह रही तुम लोग करते हो हम भी करेंगे। अरे बेवकूफ, अच्छा ये सीखो, खराब क्यों सीख रहे हो हमारा, राइट? Two boys, they bump their bike into each other and they start abusing each other's mothers. ना तुरंत, अरे भाई पहले बाइक ठीक कर, एक दूसरे का हाल पूछ, सब ठीक है? नहीं, they start abusing each other's mothers and sisters. That's what they do, right? Girls, I said girls speak softly, they speak nicely. आजकल लड़कियां भी वही करने लगी हैं, कहती हैं क्यों ना करें, लड़के करते हैं। अरे पागल, लड़के गंदा काम करे, तुम करोगी? उनको सुधारो, खुद मत बिगड़ जाओ, राइट? We shouldn't use bad language unnecessarily, especially with the strangers. It shows our bad temperament. Okay, coming back to this. So girls speak nicely, boys speak rudely. Boys speak rudely, हिंदी मतलब लड़के रूडली बात करते हैं, इज्जत देते नहीं है, सॉफ्ट से नहीं बात करते, सामने वाले की इंसल्ट करके बात करते हैं, राइट? बॉयज स्पीक एंड गर्ल्स स्पीक नाइसली, सॉफ्टली. यस, इज दैट राइट? मोस्टली इट इज राइट, ज्यादातर तो सही है। आकांक्षा, डू यू स्पीक सॉफ्टली एंड नाइसली? यू आर अ गर्ल, या दिव्या? ना, दिव्या इज एन एक्सेप्शन. She speaks nicely and softly to everybody. But to me, she speaks rudely. And she has plans. She has plans to murder me. She is collecting the weapon. She has collected 2 pens, sharp pens. She's planning to murder me at night when I'm sleeping. But thankfully, I'm aware of the plan. So I will sleep with my doors closed. Yeah?
Windows. Thank you, beta. You helped me. Yes, windows. Right. She can enter my room through the windows. Right, beta? You're right. I need to close the windows too. And I have ordered a special mosquito net. Steel mosquito net. Iron mosquito net. You know, so that mosquitoes can't enter. Divya can never enter because it will be a steel mosquito net for my protection, you know. Yeah. Okay. कुछ गया दिमाग में दे स्पीक से? वो सिर्फ दे स्पीक 2 वर्ड्स नहीं, दिमाग में ले जाने के लिए मैसेज है. बताओ क्या हुआ इसका हिंदी? दे स्पीक. राइट. मेरे फ्रेंड्स बहुत ही रूडली बात करते हैं. माय फ्रेंड्स आर स्पीक. माय फ्रेंड्स स्पीक वेरी Rudely. जोर जोर से बोलते हैं यार वो लोग. माय फ्रेंड्स स्पीक लाउडली. माय फ्रेंड्स स्पीक loudly. Yeah, my friends speak loudly. All right. And I speak very clearly. Is that right? I speak very clearly. सही है? गौर कर रहे हो? I speak very clearly. And I also speak slowly. Do you see that? I speak slowly. I give you extra time to understand what I am saying. Is that right? Okay. स्पीक कौन सा फॉर्म है वर्ब का? तो जब भी V1 लगाओगे हिंदी ऐसी होगी. अब स्पीक को छोड़ देते हैं, दूसरा वर्ब लेते हैं. वो लोग छत पे नाचते हैं. सारे लोग, वे लोग छत पे नाचते हैं. They dance on the roof. They dance on the roof. In the rain. I also dance on the roof in the rain. Do you dance on the roof in the rain? Where is the noise coming from? Where is the noise coming from? Shama, is it coming from your side? Oh, it was actually. Okay. Aliza, have you fixed your mic? Unmute yourself. Unmute yourself. Yeah. Say something, Aliza. Okay. I think I can hear some people speaking, Aliza. Is somebody watching TV or something near you? No, sir. Can you hear, Shama, can you hear some noises coming from Aliza's side? Okay. Maybe after the class, you guys can help each other fix the problem, okay? Let's see. सारे लोग बोले कि हम सुबह में हम सुबह में पानी पीते हैं. Easy sentence. गर्म पानी पीते हैं सुबह में. We drink water. We drink hot water in the morning. Very good. We drink warm water in the morning. We drink warm water in the morning. I drink warm water in the morning. I drink warm water in the morning. ये V1 का खेल देख रहे हो ना? कितना आसान है? They speak very fast. Who speaks very fast? The Wilsons. It's difficult to understand them. It's difficult to understand them. Here. It's difficult to understand them. It's my responsibility. Come and sit here. Do you have an explanation why you're late? Do you have an explanation why you came to class late today? I hear you were sleeping. Is that right? I know. But before you came here, you were sleeping. Is that right? Okay. Were you scared a little bit that I was going to scold you? Were you a little scared?
You were very scared. Oh, he was very scared that I was going to scold him. Okay. Next time I will scold you if you're late. This time it was the first time, so I forgive the first mistake. Is that all right? Is it a good thing to forgive the first mistake? Yes, sir. Yeah. Especially when you are a young child, then the first mistake should be forgiven. But if you repeat your mistake, then you deserve punishment. Is that right? Yeah. So first time, come here. Sorry, Anushka, I'm saying. Akansha, come here. Come here. She's also in class 3. She's in class 3. Now she's in class 4. You are in class 3 now. And you're only 8 years old. Wow. This girl is amazing. And you are now in class 4. Have you started your school? New school? Wow, interesting. When did you start? What date? On the 15th of April. So it's been more than a month. Today is the 1st of May. Today is the 1st of? May. Today is the 1st of? अभी मैंने बोलने का बोल दिया. आपकी बारी क्या? आप ऑब्जर्व करो. हिंदी में 1 मई है. 2 वर्ड में हो गया ना? 1 मई है. इंग्लिश में मैं क्या बोल रहा हूँ? टुडे इज द 1st of May. 4 वर्ड्स बोले. इंग्लिश बोलने में थकान हो जाती है. 2 की जगह 4 वर्ड बोलना पड़ता है. दुगना मेहनत करना पड़ता है. तो 1 मई बोलने की जगह क्या बोलना पड़ रहा है? द 1st of May. अब सुना इंग्लिश जल्दी जल्दी क्यों बोलना पड़ता है? ज्यादा शब्द को बोलना पड़ता है कम समय में. I'm just kidding, okay? Today is the 1st of May. तो अगर आप शार्प हो तो मेरे मुंह से निकले हर एक अल्फाज से आप रूल्स बनाओगे. मेरे अल्फाज से आप क्या दिमाग में बनाओगे? रूल्स. बेटा विशाल, आपने रूल बना लिया. बताइए भारत कब आजाद हुआ था? हाँ, डेट. व्हाट वाज द डेट बेटा? यही तो गलती हो गई, आपने रूल नहीं बनाया. कोई है यहाँ पर जो समझ गया क्या क्या बोलना था? भारत कब आजाद हुआ था? क्या तारीख थी वो? व्हाट वाज द डेट? देखो आप कितने शार्प हो, मैं आपसे देखना चाहता हूं. कम ऑन ऋषभ, यू शो मी बेटा. फैंटास्टिक ऋषभ, वेरी क्विक ऑब्जर्वेशन. मैंने कहा था द 1st of May. आज क्या कहा था मैंने? टुडे इज द 1st of May. 4 वर्ड्स भी बताए थे. तो आपको भी तो 15 अगस्त को 4 वर्ड्स में बदलना था. कैसे? द 15th of August. इसको कहते हैं टीचर के मुंह से कुछ निकले इंग्लिश में और आप उसको ऑब्जर्व करो और उससे कुछ सीख लो. कितनी तेजी से सीखोगे? बिकॉज आई विल स्पीक इंग्लिश ऑल द टाइम. I know it's challenging. Take the challenge. Don't give up. Don't surrender. I know it's challenging to learn while listening. Normally you learn when the teacher explains it in Hindi. And I'm expecting you to listen to me speak English and observe and learn. It's challenging, but take the challenge. Don't give up. Don't surrender. Don't say, I can't do it. Don't surrender, okay? You can do it. Try harder. Today is the 1st of May. Tomorrow is? Second. Tomorrow is? The फिर से 2nd एक of वर्ड May. छोड़ा तुमने. 4 की जगह 3 कर दिया है. The 2nd of May. The 1st of May. The 1st of May. 4 वर्ड सुनाई पड़े कौन कौन से? The 1st of May. Tomorrow is the 2nd The of 2nd of May. Yes. They speak very fast. They refers to Wilson. Wilson family. The members of the Wilson. Wilson. They speak very. They It's difficult to understand them. It's difficult to Understand. understand them. Them refers to the Wilson family, right? The Wilson family members. अभी they भी उसी के लिए था, अब them भी उसी के लिए. गौर करो. It's difficult to understand them. It's difficult to understand the Wilson family. It's difficult to understand the Wilson family. Now,
बोलो सर, आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। सर यू स्पीक वेरी, आपको समझने में मुश्किल होता है सर। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू, जैसे वहां You. देम वैसे ही यू करिए। सर यू स्पीक वेरी फास्ट, Sir, you speak very इट्स fast. It's डिफिकल्ट टू difficult अंडरस्टैंड to understand you. यू। मेरी तरफ हाथ ऐसे करिएगा तो समझ में आ जाएगा कौन सा वर्ड आना चाहिए मुंह पे, बोलिएगा। इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड You. You. Yeah. Got it? आप बहुत झूठ बोलते हैं सर। You बोलो। lie too much. You lie a lot. You lie a lot. सबसे पहले बोली खुशी, मैंने क्या झूठ बोला तुमसे यार, इतनी जल्दी तुम मान गई इस बात को, तुरंत बोल रही है सर यू लाई a lot। खुशी, मैंने से क्या झूठ बोल दिया बता दो। हाँ, नहीं सर, कितनी बोला? फिर भी तुम तुरंत एकदम ये भी नहीं बोली एक सेकंड, नहीं सर आप तो झूठ नहीं बोले हमसे, तुरंत बोल रही सर यू लाई a lot। चलो बोलो, बोलो सब लोग बोल लो, सर यू लाई a lot, बोलो। अब आगे क्या बोलोगे? आप पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। इट्स डिफिकल्ट टू राइट सर, यू लाई a lot सर, you tell a lot of lies, you tell a lot of lies, it's difficult to Trust trust you. you, okay? तुम अपनी बात बताते ही नहीं हो यार, तुमको समझने में आसान नहीं है, तुम बताते नहीं हो अपनी बात। You don't express yourself, you don't Express. express yourself, it's difficult to understand you। It's easy to understand Inaya and Ayat because they express themselves very well, very easily. They express themselves very easily. It's easy to understand the girls. अब बोलो, औरतों को समझना आसान नहीं होता है। It's difficult to understand women. It's difficult to understand. क्यों? Amen. God has made them that way. God has made them that way. भगवान ने उनको बनाया ऐसा है, so that we don't understand them. हम लोग समझ ना पाए, right? Okay. इन बातों को seriously ना लेना। Okay, they speak very fast. It's difficult to understand them. खाली इंग्लिश पे ध्यान देना कि जो भी बात बोल रहे उस बात से तुम अग्री करते हो कि डिसअग्री करते हो, मैटर वो नहीं है, मैंने बोला कैसे ये देखना। ओके बेटा, because you are here to learn English, okay? It's difficult to understand them. It's difficult to, बोलो मैथ समझना बड़े मुश्किल है सर, बोलो। It's difficult to understand To maths. understand maths, right? ऑस्ट्रेलिया को हराना बहुत मुश्किल है। It's difficult to It's difficult to beat Australia. necklace Australia. It's difficult to necklace, है ना? नेकलेस मतलब हार। मेरे एक बच्चे ने करा, मैंने उसकी वीडियो बनाई है। हाँ, एक बच्चे ने सोचा ना हार मतलब नेकलेस, हार को हारना, हार को कनेक्ट कर दिया। याद है बोनू किसने किया ये? पता है ना? हाँ, किसने किया था? अरे कुछ था, कोई नाम था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, लेकिन था कोई, ठीक है। तो इट्स डिफिकल्ट टू नेकलेस ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा थोड़ी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट्स डिफिकल्ट टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया। इट्स डिफिकल्ट टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे हरा नहीं सकते, यू कैन नॉट डिफीट मी, यू कैन नॉट। आप वोकैबुलरी जितना भी रटोगे ना, इतना नहीं रट सकते जो हम लोग यहाँ कर लेंगे। हर दिन इतने वर्ड सुनेंगे, 90 minutes English, English, English all the time. And when a person speaks, ध्यान देना, तुम जब 2 पन्ना लिखते हो ना, उसको कोई आदमी 20 सेकंड में बोल जा सकता है। जो मैं 1 मिनट में बोलूंगा, उसको लिखने में तुम्हें 15 मिनट लग जा सकते हैं। मतलब समझ में आ रही है? मैं इतनी बातें इंग्लिश में बोल सकता हूं, तो आपके कान में उतने शब्द पड़ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, कुछ और के बारे में नहीं सोचना है। ऋषभ, when you are here, you will not think about your future wife. Okay? Understand?
You will not think about your future wife. कैसी होगी, कितनी लंबी होगी. Don't think about her. Focus on me, okay? मैं बता दूंगा वो कितनी लंबी होगी. मुझसे पूछ लेना बाद में, okay? I'll tell you. But don't think about her. Okay, guys. Nobody will think about anything when you are in the class. Only think about what you are listening to. जो सुन रहे हो उस बारे में सोचो. Day 3, my first day at school. School में मेरा my first day. Day 3. My first day at school. My first day at school was very bad. My first day at school was very good. My first day at school, I don't remember my first day at school. I don't remember my first day at school. I clearly remember my first day at school. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से. Do you remember your first day at school? Do you remember your first day at school? You do? Was it bad or good? Good. Ayat, was it good or bad? First day at school? It was bad. You cried. Then why was it bad? A teacher scolded you. Then why was it bad? You didn't do the homework. And did you miss mommy? First day at school? You didn't miss mommy. Did you miss papa? No. No. Inaya, do you remember your first day at school? Was it fun? It was fun. First day at school. Away from mommy. Your mommy was not at school. I'm not talking about the new school. First day at school. I'm not talking about first day at new school. No. I'm talking about your first day at school. You remember that? It was fun. Wow. Okay. She's saying so. Well, I believe her. How many of you remember your first day at school? I remember. Hello? I remember. एक और बात बता दूं. बता देता हूं. जैसे बी वर्ब के बाद V1 नहीं आता, वैसे ही हैव के बाद भी V1 नहीं आता. ऐसा बोलो ना कि V1 हमेशा अकेले आता है. चलो बात खत्म करो. V1 हमेशा कैसे रहता है? हाँ भाई, वो शादी वादी नहीं किया दोस्तों. V1 शादी वादी नहीं किया. बोला हम अकेले रहेंगे. ठीक है? वो क्या बोलता है? हम अकेले रहेंगे. आई गो. ना कि आई एम गो, ना कि आई हैव गो, कुछ भी नहीं. आई गो. टेंशन? कोई टेंशन नहीं ना. V1 ने शादी नहीं करी, उसके साथ कोई नहीं है. बोलो. मुझे याद है. रिमेंबर इज अ वर्ब. रिमेंबर V1 है. अब बोलो कैसे बोलेंगे? मुझे याद है. आई रिमेंबर. बोलो मुझे याद है मेरा पहला दिन स्कूल का. आई रिमेंबर माई. ये बोलने के लिए तुम्हें सिर्फ एक जानकारी चाहिए कि रिमेंबर V1 है. क्या है? यानी वर्ब का पहला रूप है. ठीक है? इतना जानना होगा. जान गए? सही है. आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट स्कूल. I remember my first day at school. It was fun. It was fun. अच्छा था, मस्ती था, अच्छा था, मतलब खुश था मैं. I was fun. I was happy. You were happy too, right, Inaya? Vishal, do you remember your first day at school, beta? Do you remember your first day at school? You don't remember. You don't remember. याद नहीं है. You remember your first day at school, Divya? No, नहीं याद है. Rishabh, do you remember your first day at school? No, it was many years ago. Rishabh is doing bachelor's degree in university. All right. He's doing graduation in maths, guys. Okay. Yeah. All right. So it was long time ago, 15 years, 16 years ago. So he doesn't remember. All right. Saad, do you remember your first day at school? Don't. You don't remember? No? My first day at school. Let's listen. तो मैंने बताया मुझे याद है. I remember. अब बोलिए इससे कैसे हो गया? हो जाएगा. V1 हमेशा अकेले रहेगा. V1 का कोई शादी वादी उसने नहीं करा. उसने शादी नहीं करा. तो I am remember, I have remember. नहीं भाई, नहीं चलेगा. नहीं. Am plus V1? No.
है प्लस बी वन, नो। वो कहता है हमको नहीं चाहिए तुम लोग, हम अकेले रहेंगे, हम शादीशुदा नहीं है, हम मतलब हमने शादी नहीं की, किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेले खुश। Today is my first English class. Today is my first English class. Today is my first English class. Where? At St. Martin's College. At St. Martin's College. Which college? St. Martin's College. And It's a big school. It's a big school. Big confusion. अरे यार sir, आपने बोला college, now you're saying school. Confusion? Well, I can help you. What is a school? A school is a place where you learn something. A school is a place where you learn something. So college is a school, or yes or no? Because you learn something at college. So college is also a school. Is your family your school? Yes. mm, You learn something there. Your family is your first school. Your family is your first school. Yes. School means a place where you learn something. So every college is a, but every school is not a college. College is a special school for grown-up people. People like Rishabh, people like me, people like Saad. Understand? Yeah. We are college students, right? I mean, I'm a little too old. It's okay. But yeah, I hope you understand the difference between school and college. Every college is a, because you learn something in college. Any place which teaches you something is a school, all right? So, is this a school where you are right now? Yes, sir. It is your language school. It is your language school. It's a different story that in India we have other vocabulary. यहाँ coaching class बोलते हैं हम लोग इसको. क्या बोलते हैं बेटा? है ना? coaching. स्कूल जाओ फिर कोचिंग क्लास जाओ. What is the 1st of May? The 1st of May is Labor Day, right? Okay. In the center. It is in the center. It is a big school in the center. St. Martin's College is a big college, bhai. Okay? And it is in the center. Center of India. Center of Bihar Sharif. Then center of your house. Then where? Center of London. In the center of London. In Covent Garden. In Covent Garden. So Covent Garden is a place. Where is it? It is in London. Covent Garden is in London. Now, do you think Covent Garden is a very expensive place or a cheap place? Why do you think it is expensive? It is in the center of London. If you go to Mumbai, an area in the center of Mumbai is very, very expensive. If you go to Patna, an area in the center of Patna is very, very expensive. Yes. It's near a lot of shops. It's near a lot of shops. It is. Look at it's. It apostrophe S. It means it is. It is near a lot of shops. It refers to Government. St. Martin's College. St. Martin's College is near a lot of shops. St. Martin's College is near a lot of shops. Any problems? St. Martin's College is near a lot of shops, Cafes and theaters. cafes, and theaters. St. Martin's College is near a lot of shops, cafes, and theaters. So, in that area where the college is located, there are a lot of shops, there are a lot of cafes and theaters. It's great. It's great. Now, these three words, it's great. Again, it is great. What does it mean? चलिए सबसे पहले चलते हैं हमारे नए नवेले स्टूडेंट शारिक अली. इट्स ग्रेट. इट इज ग्रेट. इसकी हिंदी करिए शारिक.
थोड़ी परेशानी में आ गए? Yes, sir. ग्रेट मतलब शारिक? Great मतलब सर एक बड़ा, और एक great मतलब ये जो आप कर रहे हैं मीनिंग अंदर ढूंढ रहे हैं अपने दिमाग में। आपको मीनिंग अपने दिमाग में नहीं, सेंटेंस में ढूंढना है। वो कहाँ बोलती है इट्स ग्रेट, उसके पहले क्या बोली थी? इट्स नियर अ लॉट ऑफ शॉप्स, कैफेज एंड cafes and थिएटर्स। theaters. इट्स ग्रेट, it means she is very happy that अच्छा, her college is near a lot of shops, cafes and theaters. आपको मैं बताता हूँ, when you're happy you can show your happiness with these three words. It's great. All right, our class is very friendly. It's great. Understand? It means you're very happy that about the fact that your class is very friendly. It's great. My class is very international. So it's great मतलब कोई हिंदी में ये महान है तो नहीं करना चाहता है, यहाँ पे करना चाहता है क्या? ये महान है, it's great, ऐसी कोई हिंदी नहीं करेगी। My class is very international. My class is Khushi, or is it your dog Khushi? Yes, sir. Sorry. What is your dog called, Khushi? Tuffy. Tuffy. Yeah. Tuffy was in Hum Aapke Hain Kaun. Sir. You've given the same name to your dog. Yes, sir. Well, my sister also got a dog a couple of years ago, and she gave her a different name, slightly different, Puffy. So our dog is called Puffy, and Khushi's dog is called Tuffy. Okay. It's a poodle. It's a white dog, right, Khushi? Yes, sir. Yeah, white small dog, which barks a lot. They're called a poodle. They're called poodles. Poodle is a breed, okay? White with a lot of hair. They look cute and they bark a lot. There was a conversation about the poodles in your class. The students are from Mexico. My class is very international. International means the students are not from one country. Is this class international? No, this class is not international because the students are all from one country, India. So the class is not international. If a student from Chile, if a student from Mexico joins our class, or Afghanistan joins our class, then the class will become international. And if we have 5, 6 students from different countries, then we will call our class very international, not just international, very international. Okay. So our class is very international. The students are from Mexico. Where is Mexico? Mexico is a country in which continent? North America. Common general knowledge, everybody. You know the United States of America? A country below United States of America is called Mexico. Mexico is a neighboring country of the US. Mexico is the neighboring country of, exactly. Mexico, it is in North America. Japan. Japan, where is Japan? It is in Asia. It is in, there are 7 continents, everybody. Please learn the popular countries in each continent. Japan is in Asia, okay? Egypt. Egypt. Egypt is also a country. Where is it? In Africa. Good. Your general knowledge is really good. Egypt is in Africa. Spain. Where is Spain? Spain is in Europe. Spain is in Europe. Hungary and Hungary. Where is Hungary? It is also in Europe. And Switzerland. Switzerland. Where is Switzerland? It's also in Europe. So yes, there are more students from Europe, but there are students from other continents too. There are students from Asia. There are students from Africa. There are students from North America.
Our teacher's name is Charlotte. Teacher name or teacher's name? Apostrophe S, teacher का नाम. Aliza, अपने अब्बी का नाम बताइए मुझे. Tell me your father's name, Aliza, in English. My father's name is Nalmi sir. Very good, Aliza. Very good. Okay, please do not say my father name. People, it is bad English. What do you need to say? My father's name. और किसी ने अगर बोला कि father's name क्यों बोल रहे हो? Plural father है तुम्हारे, तो क्या बोलोगे? कि you are an idiot. क्या बोलोगे? जब कोई अपनी गलती की वजह से तुम्हें बेवकूफ समझे तो उसको बताओ कि वो बेवकूफ है. किसी ने अगर मजाक में, कभी कुछ लोग ऐसे चढ़ जाते हैं, अरे तुम फादर से बोल रहे हो, प्लूरल है फादर तुम्हारे. अगर किसी ने ऐसे बोला तो उसको बोलो यू आर एन इडियट एंड यू नीड टू ज्वाइन विनेसर्स क्लास, राइट? यस, आई विल गेट यू स्पेशल डिस्काउंट. बोल देना कि तुम्हारे लिए स्पेशल डिस्काउंट दिलवाएंगे. बोलेगा क्यों? बोलना सर स्टूपिड लोगों को स्पेशल डिस्काउंट देते हैं. ये वो डबल इंसल्ट, राइट? क्या बोलोगे तुम? सर गिव्स अ स्पेशल डिस्काउंट टू स्टूपिड पीपल. उनकी स्टूपिडिटी के लिए डिस्काउंट मिलता है. जैसे भाई मेरी बात सुनो, मैं अभी मजाक वाले मूड में हूँ. सुनो, when somebody is viklang, you know, their body doesn't work properly, then they get a special discount ना everywhere. वैसे किसी का दिमाग नहीं काम करे तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए. Okay, sorry about all this stupid conversation. Let's continue. मेरे मजाक का ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है. मेरा मजाक थोड़ा अजीब तरह का रहता है, ठीक है ना भाई? टेंशन नहीं लेने का. हक साहब, सेंड मी टुडेज क्लास रिकॉर्डिंग. देखो क्लास खत्म नहीं हुआ, उनको रिकॉर्डिंग चाहिए. Yeah? All right. My teacher's name is Charlotte. She's very young and she's very nice. She's very young and she's very nice. I really like her. I really like her. I really like her. Her कौन? Teacher. She कौन? She is also Charlotte. ध्यान दीजिए. She is very young. Who is very young? She is very nice. She means Charlotte is very nice. I really like her. Her कौन? I really like her. I really like Charlotte. She's a good teacher. She कौन? She is a good Chocolate. teacher. All right. Guys, I will finish day 10 tomorrow. But I want to share with you an audio file and an exercise. Exercise 6, guys. This will be your homework for tomorrow. Are you ready? I'm sharing it in the group. We have a Telegram group, Aliza. I will add you there, and Sharik, you guys are new to the class. So message me on Telegram and I will add you to the group, okay? Okay, sir. Right. Yesterday's and the day for yesterday's. Okay. So I'm going to share. All right. Bye-bye, everybody. Take care. See you tomorrow. Bye-bye, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.